तो पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई विजन इंडिया की और एलाइट अड्यन तड़का ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और इस बीच पहली गेंद लेकर गेंदबाज आशिक तैयार जबकि रवि और इजाज आरंभिक बल्लेबाज के रूप में और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का. We are just waiting for the first ball of the match number 2 of KPL season 8 2023. तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. The first ball of the match is now coming up. Right arm round the wicket bowler bowls. This one 2 for outside the off stump and it's gone fine and it's gone over the fence for a boundary. That was an absolutely sloppy delivery. Bad piece of bowling performance from the bowler. Bowled 2 for outside the off stump. Ashik the bowler. And it went wide of wicketkeeper and also went wide of the third man fielder. And it goes over the fence for a boundary. 5 runs, 5 gifted runs. Brings the runs account open for Vision India cricketers now. 5 without loss in the first over. And Ashik starts the proceedings with a big wide. So once again he is now backing into his bowling mark. And the openers is now Ravi Pandayur and Ijaz. And very recognized pair for Vision India is now starting their innings. And Ashik now once again here he comes. Right arm over the wicket bowls. Next one outside the off stump. Quicker one. Not so missing 2 for outside the off stump and collected by wicketkeeper behind the stumps and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 5 without loss in the first over. And now once again here he bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. Ravi Pandayur is now going to face outside the off stump. Left side. This time I think it's quickly clear defense. Yes it does. 6 runs into the account of Ravi Pandayur. This time he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a long offense for 6 runs. And that 6 brings Ravi Pandayur off the mark. It's 10 without loss, 11 in fact without loss in the over number first in progress. Ashik is now going to face, is now going to bowl the next delivery. Ravi Pandayur on strike. Once again, here he comes. Right arm over the wicket. Bowls outside the off stump. Just wanted to sweep it away at the last moment. Not succeeded. He's got his inside edge on that at the last moment and collected by the wicketkeeper just coming in front of the stumps. And there is no possibility of any run. And now once again, Ashik comes. Right arm over the wicket. Bowls to the right-handed batsman. Ravi Pandayur, here he bowls, lofted, helicopter shot. This time no one in that area. A chase for the fielder. It might be cut off just inside the fence. No, in fact, it's crossed over the fence for a boundary. So fantastically struck from Ravi Pandayur. Helicopter shot he played. And at last, after being launched, the fielder won't get that one and it's crossed over the fence for a boundary. So with that boundary, the scoreboard moving up to 15 without loss now. And this is an absolutely terrific start for Ravi Pandayur. And 15 runs on the board, yet to lose the wicket straight away. The pressure is now building up on the bowler. And now here he comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. Ashik. 2 for outside the off stump. Straight away the pressure on the bowler. And he bowled a wide delivery, missing 2 for outside the off stump and a single run added in the face of extras. And with that single run, the scoreboard moving up to 16 without loss now in the open number first in progress. What a fantastic start for Vision India. And now once again Ashik bowls. This time driven perfectly, but straight to field at mid-wicket. He's got just a single for that stroke. Can't face the gap cleanly at the last moment by Ravi Pandayur. And because of that, he's got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 17 without loss. And now, one more good striker of the ball, Ijaz, is now going to face the bowler. Ashik now is continuing the bowling procedure from the commentator box. And here he comes. First time, Ijaz is now facing Ashik in the first in this match. Here he comes. Right arm over the wicket balls. Driven that one. Gone through for a single and get it completely at last before the ball has been collected by the cover point feeder and back onto the stumps. And with that single run, the scoreboard moving up to 18 without loss. And this is an absolutely terrific start for Asian India cricketers. 18 runs scored from the first over after being losing the toss and put it to bat by Elite Adyanadka. They are 18 without loss. After completion of first over. Still in overall calculation, it's going to be 7 overs remaining in their innings. And now just we have to wait and watch how many runs they are making in this remaining 7 overs with the help of
all 10 wickets. So this is the second match of this prestigious cricket tournament. Kudla Premier League Season 8 2023 is now progressing here under this bright sunshiny afternoon. It's already 11 past 50 and the rays of sun are getting brighter and brighter as the time progresses. And the battle is now started just a while ago under this tournament. The match number 2 of this tournament. And now the bowler brought into the attack is Tausif. Second power play over is now going to start in their innings. And he'll be bowling to right-handed batsman Azaz, who is off the mark in the last ball of the previous over. And now once again here he comes, Tausif. First ball of his spell. Right arm over the wicket. Here he bowls. So still some fielding adjustments making by wicketkeeper Hakim at the situation. Mid-off fielder brought a little bit of a wider for the right-handed batsman Ijad, and there is mid-off extra cover point, short fine leg, square leg, and a mid-wicket standing inside the 20-yard circle as far as the power play is concerned in the first 2 overs. And Tausif, first ball of his fresh over. Here he comes. Right arm over the wicket to the bowling to the right-hand batsman Ijaz. Outside the off-stump, cracks it away into the gap as well, and bowled the ball crossed over the fence for a boundary. He's got a little bit of a width on that, and this time he scooped it away fine, just clearing the infield and finds the gap as well a deep extra cover. Have a look at this in the replay, and he just scooped that one, just taking the advantage of that power play, and lofted that one in a style over a square of the wicket, a deep extra cover for a boundary. And with that boundary, scoreboard moving up to 22 without loss. Fantastic progress here now for Vision India after being losing the toss and put it to bat by Elite Adyanadka. They are now looking in a good situation. 22 without loss, just 1.1 over gone in their innings. And Tausif once again comes right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman Ijaz now. Meantime, wicketkeeper correcting the wickets. Bills are disturbed at the situation, and now umpire correcting the wickets, and everything now set for the next ball of the match. So plenty of spectators gathering now around the ground to watch this fantastic match of this prestigious cricket tournament, KPL Season 8 2023. The day first is now going on here, and now once again here he balls right arm over the wicket. Just gone for a slog sweep shot, not succeeded. The ball kept low at the last moment. Perfect off cutter from the bowler Tausif, and it went into the hands of wicketkeeper Hakimi. Just flicking the wicket quickly after being collecting the ball, but the batsman is straight at the stays at the crease, and because of that he survived, and the scoreboard stays at 22 without loss in the over number second in progress. And now once again Tausif comes right arm over the wicket, bowling to right-handed batsman Ijaz. So Hakim, the wicketkeeper, still some making fielding adjustment. 33 minutes given to the bowling side to complete their 8 overs quota. As far as the rules and regulations of this tournament is concerned, you have to complete their 8 overs quota under 33 minutes. Bowling side, please note. And now once again here he bowls. This time lofted straight to fielder at mid wicket, and that is the end of Ijaz. He swings that one perfectly, but can't find the gap, and a mid wicket fielder took the catch successfully in a flatter version. First wicket gone, Ijaz departs, and now Vision India cricketers lose their first wicket. It's 22 for 1. So have a look at this in the replay. The ball came just outside the off stump at the last moment. It just swings it away, but not so higher. It just pulled that one in a flatter version, and mid-wicket fielder finally made no mistake. He took the catch just inside the 20-yard circle, and that is the end of Ijaz. He's out for 5 of 4 deliveries, and now Vision India are 22 for 1. Mahesh
One more good striker of the ball coming out to the middle now. And Mahesh, as far as Mahesh batting is concerned, he is also a good striker of the ball. And now once again here facing, played that one and down to extra cover. In fact, fielder after it, the batsman got a single, and with that single, the scoreboard moving up to 23 now. So second over in progress in their innings. 10 balls in overall calculation gone. And 38 balls still have to come in their innings. Ravi Salyan Patayur back on strike. He is looking on fire. Batting on 11, including a 6 and a boundary. And once again here he comes. Right arm over the wicket, bowls to the right-handed batsman. Here he bowls. This time gone for a big one. Good one. Perfect off cutter. Gone through for a quick single. In comes the throw, but the batsman make the ground at the last moment very safely. Bye declared by umpire. Ravi Salyan Patayur ran quite lately, but completed a single run safely at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 24 for the loss of 1 wicket. And Mahesh is now going to face. Mahesh normally played for Friends Kuttar. And because of that, this tournament rules and regulation, he is playing for the batting side, Vision India. This time, reverse shot, improvisation. He played this time a chase for the fielder. It might be cut off just inside the fence. And the batsman come back for the third run and get it comfortably at last. He just played that one with a twisted bat, just clearing the end field. Scooped that one with a reverse shot and got 3 runs for that stroke. And with that 3 runs, the scoreboard moving up to 27 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. 2 overs gone, 27 runs on the board, 1 wicket lost. Still fantastic progressing here now for Vision India cricketers. And as far the present run rate is concerned, the situation for Vision India, exactly 13.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. So the third over is now going to start, and just a bowler starts a fresh proceedings from the commentator box and is wearing a number 3 jersey. Bowler Sumit, the bowler, is now brought into the attack, and he'll be bowling to right-handed batsman Ravi Patayur. In fact, the striker is Mahesh. He took 3 runs in the last delivery of the previous over, and because of that, he keeps the strike. Now, once again, here he is now going to face Sumit. First ball of the third over of the innings is now coming up. After completion of 2 overs, the fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spreading out on the field, and the first ball of the first ball after power play is now comes from the hands of Sumit. First ball, here he bowls to Mahesh. Right arm over the wicket. Here he bowls. Played that one, gone to for a quick single and get it comfortably at last. Just worked about the toes down to a short mid wicket area and gone to for a quick single by the both batsmen, and because of that, they completed a single run very easily in the end. And with that single run, the scoreboard moving up to 28 for the loss of 1 wicket at the start of the third over. And now once again Sumit comes, right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman Ravi Patayur. It's going to be a good battle now between Sumit and Ravi. And now here he comes, right arm over the wicket, bowls 2 for Osadi off stump. Straight away the pressure on the bowler, bowled Spectra wide at the last moment, and conceded a single run. And with that single run, the scoreboard moving up to 29 for the loss of 1 wicket at the start of the third over, in fact. And Sumit once again comes, right arm over the wicket, bowls. Oh, perfect leg cutter, perfect leg cutter. The batsman just wanted to follow that one at the last moment. Ravi Patayur beaten by that turn at the last moment, and collected by wicketkeeper behind the stump. Luckily, it doesn't got any outside edge or nick on that at the last moment. And finally, no damage done, and the scoreboard stays at 29 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress for Sumit. Sumit now once again here he bowls. This time outside edge, down to a third man. This could be in trouble if the throw was directly to the stumps at the last moment. But the throw went just wide of the stumps at the last moment from the short third man fielder, and because of that, the batsman crossed over for the brisky single very easily in the end. The ball was straight went into the hands of short third man fielder at the last moment. He shines at the wicket, but he misses. The ball went just wide of the stumps, and because of that, the batsman crossed over for the single very safely in the end. Sumit, right arm over the wicket, played that one, sensible, absolutely sensible. Just rotating the strike at the last moment, just pushing the ball in front of
the short cover fielder at the last moment and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 31 now in the over number 3 in progress in their innings. Again, Yari ball, reverse shot. Just wanted to play reverse shot by Ravi Padayur. Not succeeded. The ball kept at the last moment and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. There is no possibility of any run. This is turning out to be a good over so far in Elite Adyanadka's point of view. Just 4 runs conceded by the bowler in this over in the first 5 deliveries. And still in overall calculation, it's going to be last ball now remaining in their innings. Umpire in this over in fact. And meantime, umpire Roland Pito correcting the wickets and the match is now stopped for a while. The number of audience is now increasing here around the ground at the situation. Second match of this tournament is now progressing here. Last time in this over, Sumit comes right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. This time played that one, just waiting to the ball to come on to his bat. Played that one delicately, fielder standing so deep. In fact, they come back for the second and get it completely at last. This is an absolutely sensible cricket from Ravi Padayur, just tapping the ball wide of the gully fielder, backward of third man fielder, and gone through for a second run at the last moment. Fielder standing so deep backward third man, and because of that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run very safely in the end. Couple of runs to end the over. 3 overs completed, and after 3 overs they are still looking in a commanding situation. Vision India cricketers 33 for 1 after 3 overs with 5 to go in their innings. Dhanush, the bowler, is now brought into the attack, and the 4th over starts in Vision India cricketers innings. First ball of his 4th over of their innings is now coming up, and Dhanush will be bowling to right-handed batsman Mahesh. Here he comes. 2 for outside the off stump. Just wanted to steering it away, not succeeded. The ball went out of his reach. Wide declared by umpire because the ball missing 2 for outside the off stump at the last moment. And a single run added to the total in the face of extras. 34 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over. And once again, here he bowls right arm over the wicket. This time, driven that one straight to fielder. Gone through for a quick single. Fumble made by the cover point fielder. Back up by the other fielder. Deep extra cover. And before that, the batsman have got time to come back for the second run. Before that, he took eyes off that delivery at the last moment by the extra cover fielder. And because of that, the ball was flicked out of his hands. And because of that, the batsman come back for the second run very safely in the end. 36 for the loss of 1 wicket. Dhanush, here he comes. Once again, bowling to the right-handed batsman Mahesh. Improvisation. This time, not so power in that stroke. He's got a single. The fielder collected the ball just outside the 20-yard circle at the last moment. And before that, the batsman crossed over for the single very easily in the end. With that single run, scoreboard moving up to 37 for the loss of 1 wicket. Runs are coming quite freely now for the batsmen of Vision India cricketers. And slowly and steadily this partnership is now building up. Dhanush bowls. 2 follows are the off stump. Gone through for a quick single. Oh, he misses this time. The ball went just wide of the stumps at the last moment. Wide declared by umpire. And a couple of runs added to the total. Still the bowler Dhanush got his length and line problem at the situation. Bowled 2 wides in this over. Conceded 3 runs so far. And once again here he bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman Mahesh. This time, that's better. That's the line he has to bowl. Played that one. Square off the wicket. In fact, they're looking for the second. Mahesh come back for the second. And this time he get it comfortably. Couple of runs once again added. So fantastic running between the wicket. And with that couple of runs, the scoreboard moving up to 41 now for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. So run rate is now creeping up now for Vision India cricketers. And they are heading towards to a huge total. Still 4 overs to go after this one. And Dhanush once again comes right arm over the wicket to Mahesh. This time, played that one. Just waiting to the ball to come on to his bat. Driven that one down to a long off. Not more than a single.
and with that single run the scoreboard moving up to 42 for the loss of 1 wicket now in the over number 4 in progress. Still a couple of balls left in this over, and a fifth time in this over. Ravi Padayur is now coming to strike. This time steering it away delicately down to backward a third man for a single by Ravi Padayur, and with that single run the scoreboard moving up to 43 now for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. 10 runs already scored in this over. Still a ball left, and Dhanush bowls to Mahesh outside the off stump. Quicker one and collected by wicketkeeper behind the stumps, and dot ball to end the over. 4 overs completed, 43 on the board, 1 wicket lost. Still Vision India looking in a good situation. Exactly 10.75 runs for the present run rate is now progressing here for them, and half the way mark for them. Still half have to go, and let's see how many runs they will make in this remaining 4 overs. That means in remaining halfway. So 43 for 1 after completion of 4 overs. So 43 for 1 after 4 overs. I request all the players of STC Warriors and Kulshekar friends, please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. STC Warriors ಹಾಗೂ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು. So fifth over starts in their innings. 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता. वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ ओवर. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त यार फुल टॉस, गेंद को साइड पर उछालना चाहा, प्लम इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ रवि पटयूर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद उनके पैर पर टकराए, फुल टॉस के तौर पर गेंद आए थे, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर सीरज को कोई दिक्कत यहां पर महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में. रवि पटयूर का विकेट गिर चुका है और एक बेहतर पारी रवि पटयूर खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए. कुल मिलाकर 15 रन उन्होंने बनाए. रवि पटयूर स्कोर्ड 15 runs into his credit, including 1 boundary and 6, and after being playing a good knock for the side, he is backing to pavilion, and second wicket lost for Vision India cricketers. It's 44 for 2. So Ranjit, as a number 4 batsman, now comes out to the middle for Vision India cricketers. Now Vision India cricketers are 44 for the loss of 2 wicket, and now the bowler Sumit bowling to Ranjit for the first time. और सुमित ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से चिप कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ ओवर. इनफैक्ट सुमित फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए इस बार महेश सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, गेंद को हल्के से पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. तेजी के साथ गेंद पर फील्डर लपकते हुए और दूसरे रन की संभावनीयता को उन्होंने समाप्त किया इस फील्डिंग के साथ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. स्टिल 3 overs to go after this one, and Sumit comes right arm over the wicket. Again on side पर गेंद को स्विंग करना चाहा, not quite middle at the last moment. He's got a single for that stroke. शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए
एक रन का इजाफा हो चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट वन प्ले, दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर. मैच नंबर 2 इसके पीएल सीजन 8 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ. इस बार बेहतर लेग कटर और गेंद इस वक्त विकेट कीपर ने अपना काम तमाम यहां पर कर चुके हैं. परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर थी, ऑन साइड पर गेंद को बोड़ना चाहा और इस चक्कर में क्रीज से बाहर निकल आए, बीट हो गए और जैसे ही गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया. 48 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है यहां पर विजन इंडिया क्रिकेटर्स का. इट्स 48 for 3 इन द ओवर नंबर 5. So welcome back once again. 48 for the loss of 3 wicket. 5 overs completed. 3 overs remaining in overall calculation in their innings. Number 5 batsman is now comes out to the middle for Vision India cricketers. Taif the batsman. Meantime the striker is Mahesh and the first ball of 6th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. पहली गेंद लेकर तैयार ऑफ स्टंप से बाहर की और इस वक्त गेंद फेंकी काफी बाहर की और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 49 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर. फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची सीले मैदान पर, रन आउट का खतरा इस बीच थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बीच बल्लेबाज सुरक्षित एक रन प्राप्त कर चुके हैं और इस एक रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर विजन इंडिया क्रिकेटर्स. 50 रन पूर्ण हो चुके हैं. उनकी पारी का 6ठा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार और इस बीच दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इंप्रोवाइजेशन करना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. बाइक का इशारा अंपायर का और बाइक के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 51 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. 52 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. स्टिल द रन्स कमिंग इन सिंगल्स नाउ एंड slowly the bowlers is now coming into this match. This बार गेंद को खेलना not quite mid-wicket, in fact he's got a single for that stroke और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 53 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. दिस द 6th ओवर इन प्रोग्रेस और धनुष दाहिने हाथों पर द विकेट महेश के लिए. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ अब महेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है. स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में और महेश काफी आगे निकला है, लौटने का उन्हें कोई मौका नहीं और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. 53 रनों पर 4था विकेट गिर चुका है 6ठा ओवर प्रगति पर. 53 for 4 इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस फॉर विजन इंडिया क्रिकेटर्स. तो महेश की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका. 16 रन उन्होंने बनाए. 16 रन स्कोर्ड बाय महेश इन 14 deliveries just he faced and after being playing a sensible knock off their side of 16 runs of 14 deliveries he is back to pavilion and his place is now replaced by नवाज जो कि एक और बेहतर खिलाड़ी इस वक्त विजन इंडिया क्रिकेटर्स की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस बीच गेंदबाज धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला इस वक्त शफल होते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 54 रनों पर. 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 6 overs completed, 54 on the board. In the last 2 overs the bowlers of elite Adyanadka come back well now. They conceded just 11 runs in the last 2 overs and captured 1 wicket. So still in our overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in the innings. 2 ओवर का खेल
अभी भी बाकी विजन इंडिया क्रिकेटर्स की पारी में, और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं बचे हुए 6 विकेटों की मदद से। तो कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से हकीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाजी पर इस वक्त उतर चुके हैं। अब तक वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, अब गेंदबाजी पर उतरते हुए, और जहाँ तक हकीम का सवाल है, एक परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में वो जाने जाते हैं, और यहाँ पर गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाने के लिए गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नवाज द्वारा, और पहली गेंद लेकर हकीम तैयार था। इन्हें तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, एक रन मिलेगा इस बीच वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। और हकीम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉट फंड की दिशा में 1 रन का इजाफा, 56, अब तक 56 रन बच चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वां ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है, और हकीम इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज तईफ के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर मौजूद स्वीपर डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 57 रनों पर। धीरे धीरे गेंदबाज एलाइट अड्यानडका के अपना सही लय यहाँ पर प्राप्त करते हुए, सही रिदम प्राप्त करते हुए, और हकीम फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रिवर्स शॉट, सिंगल हैंडेडली स्ट्रोक, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 1 रन मिलेगा। एक हाथ से बल्ले को गेंद पर अड़ाते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ सिंगल हैंडेडली स्ट्रोक के जरिए, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और इस बीच गेंदबाज हकीम इस वक्त तैयार, और तईफ इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 59 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, 59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। Just gone for a mighty heave this time, not succeeded. I think he's got a bat on that at the last moment. Yes, he's got a bat on that, and with that single run, the scoreboard moving up to 60 for the loss of 4 wicket in the over number 7 in progress. और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ड्राइव करना चाह चुके, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, डॉट बॉल टू एंड द ओवर। 7 overs completed, 50 runs on the board, 4 wickets lost, and a fantastic comeback made by the bowlers of 60 in fact, fantastic comeback made by the bowlers of Elite Adyanadka in the last 3 overs. Just conceded 17 runs and captured 2 wickets of Vision India cricketers. Now in overall calculation, just the last over remaining in Vision India cricketers innings. It's 60 for the loss of 4 wickets. तो अंतिम ओवर का खेल बाकी, लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, जस्ट 6 balls लेफ्ट, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज तौसीफ is now brought into the attack, and last over starts in Vision India's innings. First ball of his fresh over is now coming up, right arm over the wicket bowls to the right-handed batsman. This time single-handedly stroked down to a backward square leg, gone through for a quick single, looking for the second but won't get it. Collected by the feeder inside the fence, a deep backward square leg, but not prevent the single, and with that single run the scoreboard moving up to 61 now, and 5 balls remaining in overall calculation in their innings. And now once again Tausif bowls lofted helicopter shot, but not more than a single, straight to fielder after first bounce. After 1 bounce at long on, he's got a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 62 for the loss of 4 wicket with just 4 balls remaining in their innings. 4 गेंदें बाकी, and now again the bowler comes, right arm over the wicket, just change of pace, just wanted to play that one very strange at the last moment, not calculate that one properly. Leg by declared by umpire, it's off the leg, and with that single run scoreboard moving up to 63 now. So definitely it's going to be testing time for the batsmen in this over. Only 3 singles conceded by the bowler so far in this first 3 deliveries, and now umpire signaled they are exceeded the time limit, so one fielder they have to brought inside the 20-yard circle,
as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. And now once again Tausif comes. Right arm over the wicket bowls. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Ball running down to a short fine leg. It's got a single for that stroke. In fact, they come back for the second, and that was an absolutely disaster for the batsman at the non-striker end. By added and a wicket lost. So 64 for 5, and in overall calculation, it's going to be 2 balls now remaining in their innings. So we are just waiting for the number 7 batsman, and 7 batsman is now coming out to the crease. Just 2 balls left in overall calculation in their innings. They are now 64 for the loss of 5 wickets after completion of 7.4 overs in their innings. So next one, loved it. This time down to a long on. In fact, it completed one. Looking for the second. Come back for the second. This could be in trouble. And this time, just we are waiting for the umpire decision. And it's going to be a third umpire. So that was a close call. And let's see what third umpire will give the decision. So single run added. And with that single run, the scoreboard moving up to 65 now. If the batsman is not out, then the score will moving up to 66. If the batsman is out, and the if the batsman is out, score will remain on 65. So third umpire just checking that run out, and this time signal came from umpire. He's gone. He felt just shot out of his crease, and a 5th wicket gone. It's 65 for the loss of 5 wicket with just a last ball to go in their innings. 6 wickets down, in fact, 65 for the loss of 6 wickets with just last ball remaining in their innings. We are just waiting for the number 8 batsman now. Shah Nawaz, the new batsman, is now comes out to the middle. He's at the non-striker end, and the last ball of their innings is now coming up. This time here he bowls. Driven just wide of the bowler, down to mid-on area, completed one, looking for the second, but they won't get it. And the innings is up, and Vision India Cricket has finished with 66 for the loss of 6 wickets in the stipulated 8 overs. And now the target for Elite Adyanadka is 67. They have to score for victory. With a required run rate of just under 8.5 runs per over. That means in exactly calculation, it's going to be 8.38 runs per over, the required run rate for them, for Elite Adyanadka for victory against Vision India Cricket. 67 they have to score in the stipulated 8 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings starts with the just short ball. Till then, we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with my dearest friend, fine Hindi commentator, Mr. Star Nawaz, will going to continue the commentary procedure when the innings of Elite Adyanadka will going to begin right after the short break. And now it's time for the break, and we'll be back right after the short break with Nawaz. Thank you. Dhanyavad.
बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। केपीएल 2023 सीजन 8 के दूसरे मैच आप देख रहे हैं। इलाइट अड्यानडका और विजन इंडिया के बीच आरंभिक मैच पर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स जीत हासिल कर चुके हैं सुरगिरी स्ट्राइकर्स के खिलाफ। तो शुरुआत की गेंद हवा में और ओह माय गुडनेस, इनिंग्स के पहली गेंद पर ही सफलता प्राप्त हो सकते थे यहां पर विजन इंडिया को। निर्धारित 8 ओवर की बल्लेबाजी निभाने के बाद 67 रन के लक्ष्य है। 67 इज द टारगेट फ्रॉम 48 बॉल्स। 48 गेंदों पर 67 रन। पहली मैच को देखने के बाद अच्छे अच्छे लक्ष्यों के खिलाफ जो सोच है दर्शकों के, जिस तरह के उम्मीद है, निरीक्षा है, वो तो वाकई ही दुविधा में पड़ गए हैं, क्योंकि 60, 65 या 70 जैसे रन इस वातावरण में कोई कष्ट वाली बात बिल्कुल नहीं है अगर आप सक्षमता दिखाते हैं। लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की क्वालिटी, उस मूवमेंट पर गेंदबाजों के चालाकीपन, बल्लेबाजों के कुछ अच्छेपन उनकी टीम की जीत के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से तनवीर के आखिरी ओवर के उस गेंदबाजी ने प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को जीत दी है। अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार हो जाए। एसडीसी वॉरियर्स और कुलशेखरा फ्रेंड्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए, टॉस तो हो चुके हैं, एसडीसी वॉरियर्स टॉस जीत चुके हैं। शुरुआत पर फील्डिंग करने का निर्धार भी लिए हैं एसडीसी वॉरियर्स के कप्तान ने। तो जितने भी जल्दी हो सके दोनों टीम तैयार हो जाए। और एसडीसी वॉरियर्स, श्रीदेवी क्रिकेटर्स इस केपीएल के साथ एक अविनाभाव संबंध रखे हैं, और जिस तरह से कहते हैं ना कि प्यार हो गए हैं इस केपीएल से एसडीसी वॉरियर्स को, क्योंकि पिछले 8 सीजन में 4 बार फाइनलिस्ट बने हैं और उनमें से 2 बार चैंपियन और 2 बार रनर्स के स्थान पर अपने आप को दिखा चुके हैं एसडीसी वॉरियर्स। तो निश्चित रूप से देखने वाले दर्शकों की निरीक्षा भी काफी बड़ी मात्रा पर है जब एसडीसी मैदान पर उतर आते हैं। और उसी तरह कुलशेखर फ्रेंड्स भी अंडरआर्म क्रिकेट के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपने टीम पर शामिल किए हैं। तो हर एक टीम के एक एक मैच देखने के बाद टीम पर खड़े रुके खिलाड़ियों के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में दर्शक भी जानने लगेंगे। लगातार 4 दिन के ये क्रिकेट के त्योहार, आखिरी वाले दोनों दिन फ्लडलाइट की रोशनी के नीचे भी होगा। शाम के बाद मैच। 67 रन के लक्ष्य इस बार मैदान में इलाइट अड्यानडका के लिए। वो माय गुडनेस, बहुत ही शानदार, बढ़िया, लाजवाब छक्का। अशरफ को पे पताओ, अशरफ मुत्तूर, अशरफ टॉर्पेडोज खाना, जिन नाम से भी जान लो आप, पावर प्ले के ये चीता है ये अशरफ मुत्तूर। खास करते हुए ऐसे लग रहा है कि अंडरआर्म क्रिकेट पर पावर प्ले के लिए बनाए गए बल्लेबाज है ये अशरफ मुत्तूर। हर बार, हर मैदान पर, हर मौके पर, हर वातावरण पर छक्का तो यूं ही चुरा लेते हैं। और आज दोबारा उन्होंने साबित किया है कि मैं किस तरह से छक्का चुराता हूं। रंजित अगली गेंद, और इस बार भी वही कोशिश, वही शैली, लेकिन रंजित थोड़ी सी बदलावन दिखाए वहां पर। पिछली गेंद के लाइन और लेंथ और इस गेंद के लाइन और लेंथ अवश्य फर्क लगे यहां पर, क्योंकि आखिरी गेंद जब डॉट हुए तो उस गेंद की लाइन और लेंथ अगर हर गेंद पर आप बरकरार रखते हैं तो निश्चित रूप से उस गेंद को छूने के लिए बार बार सोचने पड़ते हैं बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 67 रन के लक्ष्य सामने हो, 8 रन शुरुआत की ओवर पर बने हैं, तो ऐसे में अभी भी 59 रन पीछे खड़े हैं। 59 मोर रन्स टू विन दिस मैच इन 7 ओवर्स। बाकी बचे 7 ओवर पर, 42 गेंदों पर 59 रन। पिछले मैच को देखने के बाद अब दर्शक भी वाकई ये नहीं सोचेंगे कि बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करते हैं और गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो अपनी टीम को किस तरह से जिताते हैं, क्योंकि ये अंडरआर्म क्रिकेट की काशी है। सूर्य की किरण के नीचे जब मैच यहां पर देखे जाते हैं, खेले जाते हैं,
तब वातावरण के साथ जुड़ते हुए जिस खिलाड़ी की क्षमता अच्छे लगते हैं मैदान में, उन खिलाड़ियों को सफलता मिलते हैं, प्राधान्यता मिलते हैं, उनके हर एक योजना कामयाब होते हैं इस मैदान में। तो अशरफ मुत्तूर के साथ मुनीर, द यंगेस्ट टैलेंटेड प्लेयर, इलाइट अड्यनाडका, उत्साह के साथ चुने थे मुनीर को, और इस बार उल्टे हाथ के साथ रिवर्स स्वीप किए, डीप बैटमैन के एरिया पर दौड़ते हुए गेंद को रोकने के प्रयास पर सफलता पाए। 2 रन की समाप्ति, तीसरे रन की तड़प वहां पर थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियां आखिरी मौके पर अपनी सोच बदले ताकि बेवजह रन भागकर अपने विकेट न गंवाए। और इस बात को गंभीरता से लेना होगा आरंभिक खिलाड़ियां, क्योंकि आरंभिक खिलाड़ियों की जो जोड़ी होते हैं उस पार्टनरशिप की एक नज़ारे अलग ही रूप कर देखने को मिलते हैं अंडर आर्म क्रिकेट में। छोटी ओवर कोई मैच हो या बड़ी ओवर की मैच, एक साझेदारी जब टिक जाते हैं मैदान में, एक पार्टनरशिप जब बिल्डअप होते हैं, तो उस पार्टनरशिप बिल्डअप होने के साथों साथ उनके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी और जिस तरह से रन भी जुड़ जाते हैं, हर गेंदबाज के खिलाफ उनकी एक एक न्यूनता को समझने के मौका मिलते हैं उन खिलाड़ियों को। हम हमेशा कहते हैं अपने वीक्षक विवरण पे कि छोटी ओवरों के मैचों पर विकेट मत गवाइए, पार्टनरशिप के ऊपर प्राधान्यता दीजिए, तब जाकर रन आपके बहुत ही नाजुकी के साथ बनते हैं। आपस पर बात कीजिए, समालोचन कीजिए, प्लानिंग बनाइए कि किस तरह से रन बनाने हैं। जब 67 रन के लक्ष्य हो आपके सामने, तो हर ओवर पर कितने रन बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, अगर डॉट भी हुए गेंद तो उस डॉट बॉल को किस तरह से भरना है, किस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट को बरकरार रखना है, इन जानकारी के साथ वो समझदारी होना चाहिए हर खिलाड़ी के पास, कप्तान के पास भी। बहुत ही आला गेंद, बहुत ही शानदार डिलीवरी, निश्चित रूप से अपील पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि बल्ले से अवश्य लगे थे गेंद यहां पर, लेकिन गेंदबाज की वो जो गेंद, आप देख लीजिए रिप्ले पर कि कितनी शानदार लाइन के साथ विकेट को निशाना बनाते हुए गेंद निकल पड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अब तो गिल्लियां उड़ाकर ही रहेंगे ये गेंद, लेकिन सौभाग्यवशात अशरफ की बल्ले के नीचे वाले सिरा लगे, तब जाकर गेंद विकेट के ऊपर से छलांग लिए। अगर बल्ले से न टकराया होता तो निश्चित रूप से गिल्लियां उड़ जाती अशरफ के। अच्छी गेंद इस बार भी, और जवाब में भी कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि अशरफ मुत्तूर जब से अपने बल्ले से बड़े बड़े आवाज निकलने लगे हैं, जब से लंबी लंबी मैदानों पर नामुमकिन नजर आने वाली उस मैदानों पर भी छक्का लगाकर यह दिखाए हैं कि मैं अपनी बल्लेबाजी केवल युक्ति ही नहीं बल्कि शक्ति भी मिलाता हूं अपनी बल्लेबाजी में। पावर की कोई कमी नहीं है अशरफ की बल्लेबाजी में, टाइमिंग की कोई कमी नहीं है अशरफ की बल्लेबाजी में। और दूसरी तरफ मुनीर, अच्छी गेंद हवा में खेले, डीप एक्शन कवर्स के एरिया पर एक टिप्पे के बाद गेंद फील्डर के हाथ लगते ही एक सिंगल रन मुनीर के लिए, और इस सिंगल रन के साथों साथ रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर की प्रगति, दूसरी ओवर के आखिरी गेंद बाकी। शाहनवाज आरंभिक ओवर, रंजित के ओवर पर 8 रन खर्च होने के बाद शाहनवाज अपनी गेंदबाजी पर आरंभिक गेंद पर 2 रन, उसके बाद एक सिंगल रन, बिंदी गेंद, सिंगल सिंगल। अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद। शाहनवाज वाकई ही इस ओवर के हर एक गेंद को आप दोबारा देख लीजिए अपने यूट्यूब उस लाइव टेलीकास्ट को थोड़े से पीछे करते हुए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की गेंदबाजों की जरूरत है अंडर आर्म क्रिकेट को। हर गेंद पर वो करारा नजर आए, लाइन और लेंथ की बात हो, ऊंचाई हो, स्विंगिंग हो, और तेजी के बाद भी जरूरत के अनुसार अपनी गति के इस्तेमाल भी किए हैं अपनी गेंदबाजी में शाहनवाज। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बने हैं 13 रन। पहली ओवर पर 8 रन बनने के बाद दूसरी ओवर पर केवल 5 रन खर्च किए यहां पर मुनीर। शाहनवाज तो बिना विकेट खोए 13 रन अब 2 ओवर पर बनने के बाद 54 रन की जरूरत है, बाकी बचे 6 ओवर पर। 6 ओवर्स, 36 गेंदों पर 54 रन। हर ओवर पर योजना के अनुसार बल्लेबाजी करने की जरूरत है इलाइट अड्यनाडका को। दूसरी तरफ विजन इंडिया, द सेविंग प्लान एक स्कीम की योजना के साथों साथ एक अच्छी सेविंग योजना
अपने ग्राहकों के लिए पेश किए हैं विजन इंडिया। सिद्दीक पक्षिकेरे, अनवर शाह अंग्रगुंडी, सिराजुद्दीन, अशरफ कृष्णापुरा, इन महारथियों के संयोग के साथ विजन इंडिया कंपनी आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर एक अच्छी योजनाओं को लोग तक पहुंचाने की प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त हो रहे हैं विजन इंडिया को। और आज क्रिकेट के मैदान में अपने वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रमोशन के रूप पर फ्रेंचाइजी खरीदते हुए हजारों लोगों तक अपने पहचान दिखाने की एक कोशिश है विजन इंडिया के। और ये अच्छी बात है। ज़्यादातर आजकल छोटी हो या बड़ी, राज्य की हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, कई सारे प्रायोजकों को आप देखते हैं हर एक टीम के साथ जुड़ते हुए और क्रिकेट श्रृंखला के साथ जुड़ते हुए बड़े बड़े कंपनियां अपने नाम दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं अपने आप को। तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है क्रिकेट हर एक वाणिज्यिक क्षेत्र के कंपनियों के लिए। उनकी उद्यम क्षेत्र के हर एक सुविधाओं को लोगों को बताने के और लोगों को दिखाने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म है ये क्रिकेट, क्योंकि ये हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलाते हैं। इसीलिए तो क्रिकेट को सौहार्दता के गेम कहते हैं। हर धर्म के लोग अपने पसीना एक ही मैदान में एक दूसरे के साथ पसीने से पसीना मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, हंसी मजाक के साथ अपने बचपना याद करते हैं। और ज्यादातर महारथियां भी क्रिकेट के साथ जुड़ते हुए प्रोत्साहन भी इसी बात के लिए कर रहे हैं। तीसरी ओवर की अगली गेंद, उछाल दिए गेंद को हवा के साथ, रॉकेट शॉट, और ये रहा अशरफ के ये जबरदस्त छक्का। ये है अशरफ मुतूर, बस आवाज निकलने की इंतजार है, निशाना तो पहुंच जाएंगे। गेंद को मालूम है कि उतनी खड़क जवाब वो आवाज मिलने के बाद कहां जाकर लैंड होना है। ये कोई नई बात नहीं अशरफ के बल्ले से, खास करते हुए इस मैदान में भी कई बार अच्छे अच्छे क्रमांक के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी के वो कदर दिखाए हैं अशरफ मुतूर। वीक्षक विवरणकारों को भी उनके बारे में कहने के लिए कई सारे शब्दों को इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन सही रहे हैं बल्लेबाजी में। अच्छी थी गेंद, इस बार गेंद पर कोई खराबी नहीं, वन बाउंस मिले थे गेंद, लेकिन अशरफ थोड़ी सी उनकी निर्धार पर शायद कुछ कंफ्यूजन थे, वहां पर खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद की लाइन को समझने के बाद अपनी इरादा बदले, वो सीधे खेलने के प्रयास किए। तो ऐसे में गेंद और बल्ले के बीच बिल्कुल संपर्क नहीं। रनों की संख्या बने हैं 20 रन, 20, 2 सिक्सर के साथ अशरफ 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4 रन बनाकर मुनीर। रंजित अपने स्पेल की दूसरी ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, पेविलियन चोर से 25 नंबर की जर्सी के साथ यह गेंद, और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन की एरिया पर खेले। 1 रन तो समाप्त हुए और जब तक के फील्डर उस गेंद को विकेट तक पहुंचाने की योजना बनाए, 2 रन तो यूं ही चुरा चुके हैं, क्योंकि दोनों विकेटों के बीच अशरफ की भागने की शैली बहुत ही बेहतरीन रहा है। और आजकल तो टॉर्पेडोज खाना के एक ऐसे भूमिका बन चुके हैं, हर एक मैच पर, हर जीत पर, हर ट्रॉफी के साथ अशरफ की भूमिका, उनकी योगदान ऊंचे मात्रा पर दिखते हैं टॉर्पेडोज खाना में। मुत्तूर नाम के उस छोटी सी ग्राम के एक ऐसे प्रतिभा है ये अशरफ, उनके गांव के नाम रोशन किए हैं अशरफ ने। फुल टच गेंद, ये समझदारी के क्रिकेट, ये मिनतोस वाले क्रिकेट, क्योंकि अशरफ जैसे बल्लेबाजों को इस तरह के गेंद तब मिलते हैं जब गेंदबाजों के दिमाग पर कीड़ा घुसते हैं। अशरफ जैसे खिलाड़ियों के विकेट लेने के लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं फुल टच जैसे गेंदों के। तो उस बार उस पोजीशन पर अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आपके विकेट गिराना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे विपक्षी खिलाड़ियों को या विपक्षी गेंदबाजों को। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, 23 विदाउट एनी लॉस, पूरी 10 विकेट सुरक्षित हाथ पर। हर ओवर पर लगभग 7.85 के रन धारण अब तक प्राप्त कर चुके हैं, 23 रन। जब तक ये साझेदारी टूट
छूट नहीं जाती तब तक तो विजन इंडिया के लिए सोचने वाली बात बनेंगे, परेशानी वाली बात बनेंगे, क्योंकि अशरफ क्रीज पर एक बार चिपक जाते हैं तो फेविकॉल की तरह इतनी आसानी से नहीं छूटते हैं अशरफ, और मैदान की वो कड़कपन, वो चिपकावट हटते नहीं है मैदान से। बस टिकने की मौके के इंतजार है अशरफ। टिकने के बाद तो अपनी आत्मविश्वास को यूं ही बना लेते हैं, हर बार हर गेंद के खिलाफ अपनी योजना के अनुसार जवाब देते हैं अशरफ मुत्तूर। और आज मुत्तूर ग्राम के हर एक क्रिकेट प्रेमियां फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अशरफ उस मुत्तूर नाम को देश विदेशों में पहचान दिखाए हैं, और आजकल उस मुत्तूर गांव को जानने लगे हैं अशरफ के इस क्रिकेट के साथों साथ। और ये खिलाड़ियों के लिए भी फख्र की बात है, जब हर कोई अपने गांव के नाम के साथ उनको पुकारते हैं तो इज्जत के वो महसूसीपन वो खुद जानते हैं जो महसूस करते हैं। अच्छी गेंद, गलत अंदाज यहां पर अशरफ के, क्योंकि गेंद की तेजी उतनी बेहतरीन रही, वहां पर अशरफ को समझने की मौका नहीं दिए। लाइन, शुरुआत की लाइन को देखते हुए अशरफ ने समझा कि ये गलत लाइन पर निकल जाएंगे, वाइड मिलेंगे, लेकिन अच्छी गेंद साबित है यहां पर। अगली गेंद, ये रहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला, धन धनाधन छक्का। मैंने पिछली चक्कर लगने के समय में ही आपसे कहा कि आवाज निकल आने के बाद ये मत सोचिए कि गेंद कहां पर गिर रहे हैं, वो तो स्टेडियम से बाहर होगा, लाइन के पार ही होगा गेंद की छुम्मा देना। वो रफ्तार देख लीजिए आप, वो टाइमिंग, जिस तरह से वो अपनी पैर की जड़ों से गेंद को निकालते हैं, उस टाइमिंग के दाग देते हैं हम। हैट्स ऑफ टू यू अशरफ मुत्तूर, आप तो मिसाल बने हैं इस अंडरआर्म क्रिकेट के लिए, खास करते हुए पावर प्ले के हेड मास्टर बने हैं आप। और इस बार भी जवाब तो खड़क मिलते हुए अशरफ की बल्ले से। विजन इंडिया आरंभिक बल्लेबाजी पर बनाए हुए रनों की संख्या निश्चित रूप से ये इस मैदान के लिए काफी विश्वसनीय संख्या है। 67 लक्ष्य के ऊपर, टारगेट के ऊपर 67 रन ज्यादातर दर्शकों के दिल और दिमाग पर यह विश्वसनीय रन है, लेकिन अशरफ जैसे खिलाड़ियों को 67 हो या 77 हो या 87 हो या 97, अगर उनकी बल्ले झूमने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, तो बड़े बड़े रन भी छोटे बन जाते हैं मैदान में। तो धीरे धीरे से इलाइट अड्यानडका विश्वास मजबूत कर रहे हैं इस मैच में। केपीएल 2023 सीजन 8 8वां सीजन आप देख रहे हैं, और इतनी आसान भी नहीं है। एक संस्था लगातार एक क्रिकेट श्रृंखला, और इतनी भी बेहतर क्रिकेट श्रृंखला, इतनी शानदार क्रिकेट श्रृंखला को बिना रुके लगातार 8 सीजन तक सफलता के साथ आगे लेके जाना, एक सक्सेस रूट पर हर बार भी वो सक्सेस प्राप्त करना इतनी आसान बात बिल्कुल नहीं है। तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद कहते हैं, अभिनंदन करते हैं केपीएल के तमाम संगठकों को, प्रायोजकों को, ताकि आप लोगों की वजह से लाखों क्रिकेट के प्रेमियां आज इस अंडरआर्म क्रिकेट के स्वाद ले रहे हैं। तो रेफरी रोलन पिंटो कुछ समझाते हुए विजन इंडिया के गेंदबाज को, शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के सामने खड़े रुकते हैं गेंदबाज, तो इस बात के लिए चेतावनी दे चुके हैं रोलन पिंटो। तो उस चेतावनी के बाद अगर दोबारा वो गलती करते हैं तो सजा के रूप पर क्रिकेट के नियम के अनुसार जो सजा या जो फाइन यहां पर देना है, उस बात पर चर्चा हो रहे हैं। श्रीराज कुंपला स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर, रोलन पिंटो, हरीश पटेल, दक्षिण कन्नड़ जिला के मशहूर रेफरियां, अनुभवी रेफरियां, कामयाब रेफरियां। तो विजन इंडिया के तमाम खिलाड़ियां आपस पर चर्चा करते हुए दो गेंद अभी भी बचे हैं, लास्ट 2 more balls टू गो। तो आपस पर चर्चा करने के बाद फिर फैल चुके हैं मैदान में।
शाहनवाज। अंपायर से पनिशमेंट लेने के बाद गेंदबाज के बदलावन महेश को लाए हैं बचे हुए 2 गेंद को पूरा करने के लिए। शाहनवाज के लाइन और लेंथ पर कोई कमजोरी नहीं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन गेंद को दिखाए हैं शाहनवाज। पिछले ओवर पर भी आप देख सकते हैं केवल 5 रन के ओवर दिखाए हैं, तो निश्चित रूप से ये विजन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी झटका है। शाहनवाज के गेंदबाजी के लिए कोई अंकुश होना या उनकी गेंदबाजी के खिलाफ कोई निर्धार आता है तो विजन इंडिया के लिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त झटका वाली बात है। महेश और इस बार फुल टच गेंद लॉन्ग आउट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा दमदार जबरदस्त चक्का। 99 नंबर के जर्सी के साथ अशरफ। तो आप मेरी अंदाजा यह है कि वो 99 नंबर इसलिए होगा कि शतक की वो जो आंकड़ा है, मैं इंतजार नहीं करता हूं कि मुझे अर्धशतक बनाने हैं या शतक बनाने हैं, मैं तो यूं ही खेलते रहूंगा। मैं किस वक्त रुक भी सकता हूं और कितनी देर भी लंबी चल सकता हूं। छक्के के बाद फिर गेंद को कवर पॉइंट के एरिया पर खेले जब तक कि फील्डर दौड़कर उस गेंद के पास आए। 1 समाप्त, 2 समाप्त, और इनकी पैरों की रफ्तार तो बढ़ते हुए नजर आते हैं मैदान में। मुनीर और अशरफ की जोड़ी आखिरी गेंद पर 3 रन चुराने के बाद अब रनों की संख्या आगे बढ़े हैं 41 रन 41 पर। चार ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 41 रन। 41 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 67 इज द टारगेट। तो अब बने हुए रनों की संख्या 41 रन। अब 26 रन पीछे खड़े हैं बाकी बचे 4 ओवर पर। 24 गेंदों पर अब 26 रन। तो यहां पर भी मैं याद दिला दूं दर्शकों को और खेलने वाले खिलाड़ियों को, शुरुआत के 4 ओवर के वो रन धारण के विश्वास पर आगे आने वाली ओवरों को नाजुकी नजर से मत देख लीजिएगा। मैच कभी भी पलट सकते हैं, प्रेशर कभी भी आ सकते हैं मैच के ऊपर। जिस तरह से पिछले मैच को आपने देखे सुरागिरी स्ट्राइकर्स और प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के बीच, आखिरी ओवर पर 5 रन नहीं बना पाए हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति, अशरफ की बल्लेबाजी अभी भी बाकी बचे हैं। तो अब तक 4 छक्के जड़ चुके हैं अशरफ। तो इन चारों छक्के के लिए अलायंस दुबई की तरफ से 1,000 रुपए के हिसाब से पैसा मिल चुके हैं अशरफ को। अब लगने वाले सिक्सर को भी मिलेंगे, हर सिक्सर को 1,000 रुपए के इनाम इलाइट के सपोर्ट के रूप पर अलायंस दुबई की तरफ से। तो आरंभिक बल्लेबाजी, आरंभिक जोड़ी अभी भी बरकरार है, नाबाद है। तो आइए देखते हैं बचे हुए 4 ओवर पर 26 रन क्या आसानी से बन जाएंगे या विजन इंडिया वापस आती लाकर इस मैच पर पकड़ पाने की, एक मजबूती पाने की कोशिश करेंगे। इस बात को लेकर वीक्षक विवरण पर हम बदलावन करते हैं। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं आंग्ल भाषा के मशहूर वीक्षक विवरणकार सतीश हनुमान मैंगलोर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Star Nawaz, and good afternoon, cricket lovers. And immediately, the 4 overs which is completed, then beginning of the first delivery, it's a wicket which is falling of team Elite Adyanadka, and they lost the first wicket. After that, fantastic partnership for the first wicket, 42 runs for the first wicket. And it is one highlight of the innings is Ashraf's absolutely, he played astonishing batting performance in the middle. 4 sixes in his innings, and all we can see that the sixes which came from the bat of Ashraf is a huge sixes. It never looks like it's going to be a half-hearted stroke. All the stroke which came from the bat of Ashraf, which is really clearing the ground, and he is a man definitely in a terrific form for Elite. But still, I think the opportunities remains there for Vision India cricketers, because they got a wicket what they really wanted. Because if they wanted back in the game,
I think the wicket taking is very, very important for Vision India cricketers if they back in the game. And wait to see after getting a wicket in the form of run out, how well they will going to tighten up the screws out here. Taif is a bowler brought into attack from the commentary box, and he will go into bowl to new batter Hakim, one more very cool and calm customer in under-arm cricket, and he will go into face his first delivery, and Taif will go into ball his second delivery. Again, this time almost he wanted to play that one down to a backward point. Of course, he succeeded before Mahesh will go into collect the ball down at backward point region. Ample time for Hakim to open his account. One for him, the total score now moves on to 43. 24 more runs required for the victory. The 67 which is the target. This time, have a look at the stroke. I'm really impressed at seeing the bat speed of Ashraf. It's not so easy, I want to say. I want to tell you that in under-arm cricket, when bowler is bowling in such a pace, how well he managed to connect the ball. It's all up to the bat speed of the batter. How quickly he managed to get that one to his bat. Again, opportunities created for the run out. One more opportunity. Mahesh little bit fumbled because ball went straight to the hands of backward point region. Mahesh couldn't manage to gather the ball neatly so that both the batters completed a single. 45 for the loss of one wicket in the over number 5 in progress. Bowler Taif trying his level best to get some wickets in this over. Especially this man, Ashraf, are looking so good after hitting of 4 sixes. He got 4,000 rupees, and he will go into face Taif. This time, he will go to get the 5,000 now. What a stroke that one. That ball went out of the park. No. Ball just landing into the ground after hitting the commentator's rope. What a mighty striker of the ball. Absolutely, he muscles that one. Have a look at the stroke. High and handsome. The fifth six, 50 comes up for team Elite Adyanadka. This is frustration and the pressure. Straight away into the bowler. Taif ball the big wide, defeating everyone. And it's going to be a bonus run for team Elite Adyanadka. White plus 4, 5 runs added to total. Then 56 for the loss of one wicket, and they are cruising towards the victory. Always very difficult for the bowler when the batter leading the balls out of the park means all we can see that under pressure situation for the bowler. Again drives that one, bowler's back, not quite getting hold of that one properly. Ashraf almost drags the ball from outside the line of off time to hit the ball down to deep long on region. 57 for the loss of one wicket. Absolutely astonishing batting performance here from Ashraf in this their first league match, the second match of the KPL season 8. This time Hakim doing the right job, just pushing the ball between the gap to pick the single down to deep long off region. One more big over which is completed, expensive over which is completed after completion of over number 5, chasing a total score of 67 to win this match. Team Elite Adyanadka are 58 for the loss of one wicket, and the remaining 3 overs, 18 balls remaining. They have to get another 9 runs to win this match. The equation are probably in favor of Team Elite Adyanadka. This is a one-man show, I want to say. Ashraf, the moment he came into middle, the first 6 which I observed, he played against Ranjit's bowling, played across the line, swings it down to deep square leg. Then same bowler punished when he came in the second over, and in a different end he played at on deep long off region. 6 which is sailing out of the park towards a deep long on, and hit that one from the commentary box end. And 2 sixes which is came from this end, commentary box end, and 3 sixes came from the far end. This time opportunity of caught and ball. Oh, he drops the catch. Izaz. Not, yes, he is taking that one lightly in the negation and caught and bowled of Hakim. Hakim wanted to play one of his favorite flick shot, helicopter shot, but the ball just slipping out of the hands of Izaz on his follow through. 59 for the loss of one wicket. Izaz.
Again, bowler's back drive. This time Ashraf tried to force that one. Because of that, the slowness of the ball, he couldn't manage to get the timing behind the stroke. Izaz again. Right arm over the wicket. This time ball is going down the legs, and maybe Izaz looking for the experiment to bring the ball around the legs of the batter. But he misses the line completely. Umpire not missing here to signal the wide. This time he got that one. Will it going to be one more six? Yes, he does. Number 6. Now even Ashraf is not believe it himself, because after hitting the ball, he's almost walking towards the pavilion. Thought it might be all over. But today is a win for Ashraf. Everything which is hitting, that ball is going over the boundary line. Now he wanted to finish up the match. He's batting on 48 now, and Ashraf need to be very careful, because if able to get a couple of runs, he will going to get a 50. It will going to be a first 50 of this tournament now, and yes, always going to be under pressure, because when you are realizing that I am on the 48 and the team wanted 1 run to win the match, but I want to get 2 runs to get the 50, the slight bit of the mindset which is definitely going to be different. Oh, very close to that off stump in the relegation. Now, very, very interesting to see that. Will it going to be a possible for Ashraf to get a 50? But I think it's a very difficult one, because Akim have to make a maiden. But I think our run rate always going to be matters in the league stages matches. Run rate which comes into play. If you manage to finish the match early, it is going to benefits you. It's not an individual game. It's a team game. And of course, Ashraf definitely little bit disappointed, but he will not going to disappoint the way that he is batted today. He is really entertained the crowd. He is not only entertained the crowd here in UCG Cricket Ground, the very good number of crowds, but he won the plenty of plenty of viewers in M9 Sports watching a live telecast of this KPL Season 8. Akim, this is enough for them to win the match. So the comprehensive victory here for Elite Adyanadka. They defeated their opposition by huge margin of 9 wickets and 1.5 deliveries to spare, and that will go into benefits Elite Adyanadka to get some good net run rate. And unfortunately, team Vision India, they lost the match. Even they got good score on the board, but it's not good enough for the bowling department. And I hope they will go to correct that one department when they're going to play their second match of their league stages matches. This is a result of second match of the KPL Season 8 day number 1. The second match which is on by Elite Adyanadka